this very important subject of research methodology. The purpose of your higher education uh, revolves around building skills, advanced skills, और उसके बाद जो what is expected of you या what you expect from yourself is that you come up with a novel idea or a novel product that will have value. So I already shared a video. I am not sure आप लोगों को मिली है कि नहीं regarding the importance of quality publications, respected publications. मैंने शेयर तो की थी, अब आई डोंट नो आप लोगों को मिली है कि नहीं मिली। सर ईमेल से पे मिल गई आपकी थी। वीडियो आई हुई। तो अब जो चैलेंज है, व्हाट इज़ द चैलेंज? चैलेंज जो है वो ये है कि आप जो है यू विल स्टडी डिफरेंट कोर्सेज, आप डिफरेंट अपनी स्किल सेट्स बेहतर करेंगे, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, सिग्नल प्रोसेसिंग, कंट्रोल सिस्टम्स, जो भी आपका बैकग्राउंड है। तो यू विल टेक few courses and you will be very good in them. आप जो है ना, we hope that you excel in them, but there is this missing link कि अच्छा just by taking these specific courses is it good enough? मतलब यही skill set चाहिए होता है to become a good researcher or an innovator, or is there something else required? तो आमतौर पे जो तसव्वुर किया जाता है वो ये किया जाता है कि if you have been admitted in any discipline, तो just by taking those courses, just by sitting in the classroom or in the lab or walking through the corridors of national university, you will develop those skills magically which are not taught to you. तो फॉर एग्जांपल अगर आप मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं तो आपको मशीन लर्निंग बहुत अच्छी आ जाएगी और मैजिकली आपको जो है मशीन लर्निंग से आप आइडिया भी प्रोड्यूस कर लेंगे एंड यू विल प्रोड्यूस अ नॉवल प्रोडक्ट एज वेल। तो ये this is one of the reasons that we want to offer this course in the first semester. If you compare your degree with the other uh, master's degrees in NUST or around Pakistan, this course is usually offered somewhere later in the degree program, और इट इज़ नॉन क्रेडिट कोर्स, मतलब ये इसका पेपर नहीं होता। तो तसव्वुर इससे ये किया जाता है कि बस इसमें तो आपने बस बैठ जाना है और कुछ बातें सुननी है एंड दैट इज़ इट, और असल कोर्सेज आपके वो हैं जिनका पेपर होता है। तो सो दिस इज़ द रीज़न वी हैव शिफ्टेड दिस कोर्स टू द फर्स्ट सेमेस्टर, और we want to know is there any other skill that you need? Maybe you are very good technically, but if there are other skills required, मतलब there are questions कि how to think about a novel idea, where do these ideas come from? सारे एक ही किताब पढ़ रहे होते हैं ना सिग्नल प्रोसेसिंग की, तो वो जो या किसी भी सब्जेक्ट की, तो जिसको अच्छा आइडिया आता है उसको कैसे आ जाता है? तो there are other aspects as well. So this is the reason this course is the most important course, even if you don't want to be an engineer. So you want to develop those
exercises. You want to develop those muscles which help you, those exercises that help you improve your innovative thinking. तो इसमें क्वेश्चन ये है कि अच्छा अगर कुछ वेरी वेल नोन एक्सरसाइजेज हैं जिनको पढ़कर या सुनकर प्रैक्टिस करके नॉवल आइडियाज़ आ सकते हैं तो कोई भी कर लेगा. So the thing is that we may not know what is the recipe for success, but maybe there are some bad habits that we should not follow. कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें पता है कि इनके करने से तो कम से कम जो है ना सक्सेस अटेन नहीं होने वाली. तो we will try to uncover those aspects inshallah in this course. So what I want to say is that this course is the most important course even if you don't want to be an engineer. अभी आप देखेंगे कि having technical skills is not enough. Thinking about a new idea is important. Then there are some habits that one needs to develop. Then let's say you have a very good idea and you have proved it using your experiments. Is it enough? उसके बाद कुछ नहीं करना होता. So we will see that the biggest hurdle that you will face, at least as a researcher, is that it's not about having good results. It is about convincing others that your results are good. So then you need to develop persuasion in your writing and in your presentation. और इसमें ये है कि इज़ इट मतलब चलें ठीक है आप आपने एक्सपेरिमेंट्स भी ठीक कर ली और आपने राइटिंग भी, योर राइटिंग वाज वेरी गुड एंड योर पेपर इज एक्सेप्टेड. इज़ इट गुड इनफ? लेट्स से ये आपकी बात सिर्फ दुनिया में 2 बंदों को समझ में आती है, तो मतलब ये इसका कोई फ़ायदा होगा आपको? मतलब you need to, if you want people to value your experiment, you should develop those skills to market your research. So maybe I have come up with a new theory of relativity, but अगर मैं किसी को समझा ही नहीं सक रहा तो कोई इस्तेमाल ही नहीं करेगा, तो उस रिसर्च का क्या फ़ायदा हुआ? So then it becomes very important that one needs to learn how to develop persuasive presentation skills. तो अभी तो this is just my brief introduction. ये अब आपने क्योंकि AI की क्लास मोस्टली लोगों ने ले ली है तो you know who I am. तो जो the video that I shared the other day, this is तो ये जो है ना अब आपका जो है वो गोल है कि once you develop all these skills, you take different courses and you get whatever grades you get, maybe good grades, and then you think about your sole purpose is to think about a novel idea. तो यहाँ पे ना this is a graph from a very famous researcher, current researcher. This is his opinion. आप ये देखें कि if you have written a paper which is okay, which is pretty good or which is like bad, कुछ खास फर्क नहीं है उसकी आंखों में इसके कोई effect on your career if you look on the y-axis. So this is generally the current trend around the world and especially in Pakistan. You will find even undergrad students boasting about having a research paper. So this is what his advice is, that
only very good papers will have any value. इसके अलावा जो भी papers हैं ना, तो जो the research world has this perspective. So even pretty good paper is like it's an okay thing for him. So this is what we are aiming for. अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो उसका मैंने आपको तरीका बताया था कि you go and you search on that website and you find out where are the top venues, and if your paper gets through that venue, then it is considered original and good. That is the proof of your skills, your presentation skills, your writing skills. So what we want in this course is we will take you through this exercise. ये जो पूरी cycle है, how to think about a novel idea, क्या exercises हैं और क्या bad exercises हैं, and how to write effectively और फिर how to present effectively. So these are the three components. So what we will do is कि inshallah we will go through these exercises in this course, and this is the most valuable skill you will need. For example, in future you decide to make a startup or you want to get into business, so these are the skills which you will learn over here. They are generic. So if you can convince the research world, it will be slightly easier for you to convince the general public. Because maybe the general public is not that critical of your work. Researchers are generally very critical. They don't appreciate someone else's contribution easily. So we want you to go through this cycle. तो फिर इसके लिए we have decided that you will make groups. आप group बनाएंगे for 2 से 3 लोगों का आप group बना लें, and then we will give you a topic. Then you will go and do literature review. You will read 30, 40, 50 papers, और फिर जो है you will write a report 6 to 8 pages. You will make a presentation of 10-12 minutes, and then you will make a video of that for 3 minutes. ये 3 components होंगे आपके, and then we will share your output with the researchers in our department, and if they agree that you have shown some understanding of the whole process, so you will get the passing grade. And if your work is below the requirements, then obviously you will not pass this course. So again, this is slightly different from what is the normal situation which goes around, that everybody who registers for this course maybe passes this grade. I don't know. But maybe this time it will be different, or we will share your paper with multiple reviewers. It will be an average decision, so it will be a fair decision. So anyways, we hope, what we want and what we would love that is कि आप जो है इस exercise से you go through and you manage to learn the initial skills. We don't expect you to write a report which is like written by a researcher having 10 years of experience. So we want you to go through this cycle ताकि जब next year when you are doing your thesis, then when you have very good results, you are almost ready to get credit for your work. So what is the current situation is that we have students with very good results, but since their this writing skill is, or this presentation skill is not up to the mark, they are unable to publish it. And since they are unable to publish it, they are not getting credit for the work they have done. So we will take, inshallah, we will
this time take it seriously. In the last few weeks of this lecture, you will present your work to other researchers or professors, and hopefully you will do a very good job. So this is our goal. And as we go along this course, you will see that things are very simple. It's just that they demand time and effort from your side. ये दिस वाज द वीडियो विच आई शोड यू दी, ये जो मैंने शेयर की थी, ये शुरू के पार्ट्स हैं कि इफ़ यू डू मैनेज टू कम अप विद अ नॉवल पेपर और आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में है वो पेपर, पीपल विल कॉन्टेक्ट यू एंड दे विल से कि अच्छा दिस मच इज़ द सैलरी, और आपकी स्किल सेट जो है वो हमने देख ली है लिंक्डइन में, एंड दे विल नॉट केयर कहाँ आप हैं और क्या आपका जीपीए है, क्या आपका पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड। तो करंट स्टेट ये है कि यू आर द स्टूडेंट सिटिंग ऑन दिस ब्लैक टेबल, और अभी हम कुछ कोर्सेज पढ़ेंगे जो आपकी टेक्निकल स्किल्स डेवलप होंगी, एंड देन इन द नेक्स्ट फेज, रिसर्च फेज, होपफुली यू विल मैनेज टू कम अप विद अ नॉवल आइडिया, और आप पब्लिश करेंगे या स्टार्टअप बनाएंगे या कोई स्किल डेवलप कर देंगे नॉवल, तो यू विल गेट अ गुड जॉब। तो यही ये जो है ना, दिस नोवेलिटी एंड ओरिजिनलिटी, दिस इज द फोकस ऑफ दिस पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो ये जो फोकस है हमारा नोवेलिटी पे या इनोवेटिव थिंकिंग पे, अगर यही फोकस है, अगर ये मकसद है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम का, तो वो कहाँ है स्किल सेट जो आपको हेल्प करेगा टू इम्प्रूव योर इनोवेटिव skills. That is the reason we have like pushed this course in the first semester, ताकि आप पहले दिन से ही you start improving your skills. If this is the last lecture somebody is taking, then उसके पास कौन सा वक्त रह गया to develop skills which he can already apply in his research phase or thesis phase. This is again another novel factor, especially for the AI and autonomous system stream. So during the lectures we will go through these skills, and these are not technical discussions, they are just simple discussions, and we will try to answer these questions कि अच्छा कहाँ से आते हैं अच्छे आइडियाज़, और how to make your idea memorable. So there are some good habits and then there are some not so good habits which we would learn to avoid. And once you learn these habits, you will sit in presentations and you will see your colleagues making the same mistakes which are almost criminal. Can't do this. How many times आप बताएं, how many times you have attended a presentation which you never cared about after 30 seconds? Obviously आप लोगों ने attend की होंगी. So most of the times. तो the question that arises कि अगर आपकी कोई presentation सुन ही नहीं रहा, तो आप जो मर्जी बोलते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने जो एफर्ट की प्रेजेंटेशन में
Sir, I think your mic is muted. जी hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, we sir. can hear you now. Okay, so there is some internet connectivity issue. So can you see my screen? No, sir. Now can you see my screen? Yes, sir. नजर आ रहा है आपको? Yes, sir. तो ओके, सो अभी जो हमने करना है वो ये है कि we need to like discover what are the generally held ideas about a creative person. So I will ask few questions. तो फिर जो है ना I would want कि आप जो है ना उसका जो भी आपके ज़हन में जवाब आता है ना वो आप दे दें. So we will try to investigate whether we are thinking in the right direction or not. So these are very simple questions. अच्छा, so what comes to your mind when I say that person X is creative? The person is innovative and can think of solutions in different ways. अच्छा, तो चलें ये मैं स्क्रीन आपको दिखाता हूँ. Can you see the PowerPoint? No, sir. No, sir. Now can you see the PowerPoint? Yes, sir. Yes, sir. So चलें, good. So this is the first question. क्या होगा? Which place, I mean, कहाँ पे आप होंगे तो you are more likely to have the Eureka movement. क्या कहते हैं इसको? Hilltop. Hilltop, sir. इसको उर्दू में क्या कहते हैं वो शायर को जो आमद, हाँ आमद कहाँ पे होगी आप पे एक आइडिया की?
एक तरफ शोर है और एक तरफ जो है ना सुकून है। व्हाट इज़ योर, हम ये सर्वे कर सकते हैं, वैसे मैंने एक सर्वे बनाया था, मैं आपसे शेयर करता हूँ, आप इसको फिल कर दें। We can try this. सर वैसे भी एक रिसेंटली शोर में ना ट्रैफिक में मेरे पास एक आइडिया आया था एमएल से रिलेटेड, जो आपके लेक्चर्स के बाद आइडियाज आना शुरू हुए हैं, तो वो शोर में भी एक आया था वैसे। सर आइडिया कहीं भी आ सकता है। हाँ, आइडिया कहीं भी आ सकता है, लेकिन हम ऑन एवरेज बात कर रहे हैं ना कि इफ़ आई वांट टू लाइक बी अ प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव पर्सन, व्हिच काइंड ऑफ एनवायरनमेंट शुड आई प्रेफर। तो आने को तो ये मैंने आपसे एक शेयर किया है, ज़रा देखें, लिंक ओपन होता है, ये जो मैंने चैट में शेयर किया है। यस सर, हो रहे ओपन। इसको ज़रा फिल करें ना, तो लेट्स सी हाउ मेनी पीपल एग्री ऑन वन ऑप्शन। सर वैसे ये इंजीनियरिंग आइडियाज जो हैं, जो लेट्स से ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, वो तो लाइक हमें अगर सिर्फ आइडिया की बात करनी, वो तो ज़रा क्राउड के अंदर ज़्यादा नहीं आने चाहिए कंपेयर टू लाइक जो साइंटिफिक आइडियाज जिनके लिए थोड़ी आइसोलेशन चाहिए और थिंकिंग वगैरह ज़्यादा हो। आई डोंट नो, मतलब अगर तो इसका कोई वाज़ेह जवाब होता तो सारे वही कर रहे होते, बट वी जस्ट वांट टू नो कि मतलब कि व्हाट इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड माय रिसर्च, जब मैं मास्टर्स मैंने स्टार्ट किया, तो मेरे जहन में कुछ ख्याल थे कि अच्छा इस तरह करूँगा ना मैं, इस तरह की मेरी हैबिट्स होंगी तो मे बी इट्स बेटर फॉर मी। तो आमतौर पे यही होता है कि अगर आपने कुछ सोचना है तो उसके लिए आप चाहते हैं कि कहीं खामोशी हो और वहाँ पर आप बैठ कर सोच सकें। तो जनरली होता भी यही है कि लोग यही करते हैं कि लैब में अकेले बैठ जाते हैं। The picture you have of a researcher is of someone sitting in the lab. So maybe this is what I thought. This is the perspective I started my master's with, and I completed my PhD, I think so, with the same perspective. Let's see if there are any concrete examples which can support this view or contradict. So we will cover this thing. तो ये देखें ना, ये जो सवाल है बुनियादी तौर पे ये सवाल है रिलेटेड नॉट विद योर टेक्निकल स्किल्स, इट इज़ रिलेटेड विद योर हैबिट्स। तो मे बी वन हैबिट इज बेटर देन द नेक्स्ट हैबिट, तो वी विल फिगर दिस आउट। सर वैसे मेरा एक पर्सपेक्टिव इसमें ये है कि अगर आपके पास टेक्निकल स्किल्स बहुत स्ट्रांग हो तो आपके पास आइडियाज भी ज़्यादा आने का चांस है। Maybe you are right, but we will see about it. क्योंकि अगर तो आपकी टेक्निकल स्किल्स अच्छी हैं तो दिस मीन्स के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका जीपीए अच्छा है उनके पेपर भी इनोवेटिव होने चाहिए सबके। वो तो हमने होते हुए नहीं देखा। ऑब्वियसली यू नीड सम स्किल्स टेक्निकल स्किल्स में स्किल सेट भी आ जाता है, आपका वाइड स्किल सेट हो, और दूसरा आपके कितने सिनेरियोज आपने इनकाउंटर किए हैं टेक्निकल सिनेरियोज, तो उनसे फिर आपका और माइंड जो है ज़्यादा डिफरेंट पर्सपेक्टिव में सोचने लगता है। अच्छा, अभी देखते हैं ना, ये हमारे पास रिजल्ट्स आ गए। ये वेबसाइट है, पता नहीं, आई एम यूजिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, लेट्स सी। तो we have 36 responses and most of the people, the mountain side जो है ना, it's preferred। ठीक है, चले, let's move on. We remember this answer and if we find any evidence to support it, we will do what you have suggested. What about this one?
एक तरफ तो है जो राइट साइड पे बंदा है वो तो वैसे ही है जैसे मतलब मैंने या आपने कपड़े पहने होते हैं और नॉर्मल पर्सन है. ऑन द लेफ्ट साइड द पर्सन सीम्स लिटिल बिट क्रेजी और आई डोंट नो डिफरेंट. इसके बारे में क्या राय है आपकी? सर मेरा ख्याल है कि ये जो लेफ्ट वाला बंदा है ये ज़्यादा क्रिएटिव होगा, क्योंकि इसने जिस तरह भी अपने आप को किया है, तो एक डिफरेंट तरीके से एक अपनी अपनी सोच की तरफ किया हुआ है. जिस तरह उसकी मस्टैश है वो उसने अपने हिसाब से की हुई है. जो उसने एक नेकलेस टाइप पहना हुआ है वो भी उसने एक अपने स्टाइल का किया हुआ है. उसका हेयर स्टाइल एक अपना है. तो उसने जो कपड़े जिस तरह पहने हुए हैं तो हर चीज़ इसी चीज़ की तरफ जाती है कि मे बी ही इज़ मोर क्रिएटिव इन थिंकिंग डिफरेंटली. सर मेरे ख्याल से जो लेफ्ट वाला बंदा है उसकी तस्वीर जिसने खींची है वो क्रिएटिव है. अच्छा क्योंकि तीसरा बंदा आ गया वो. उसने उसको कॉस्ट्यूम पहना के ऐसे बिठाया हो तो वो किसी एक्टर की या किसी कैरेक्टर के बना के खींचना चाह रहा हो तो वो भी क्रिएटिव हो सकता है. और जो साथ वाला बंदा है उसका भी जो खींचने वाला है वो क्रिएटिव हो सकता है. मतलब he made him to laugh this way so he can take his pic. So I think creativity lies in how you see the things. It's not about being in a certain environment. और अगर आपके पास स्किल सेट नहीं भी है देयर आर मैनी थिंग्स कि आपको कोई बड़ा ही अनपढ़ सा बंदा भी आपको कोई प्रॉब्लम बता सकता है ना कि अगर कोई यार ये ऐसा हो जाए या आप लोग पढ़े लिखे हो तो यार इसका तो सोल्यूशन निकालो कि ये चीज़ जो है वो ठीक हो जाए. जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रैफिक लाइट्स हैं जो सोलर पे चलती हैं. शाम को जब अंधेरा होता है तो वो ऑटोमेटिकली ग्लो कर जाती हैं. सो आई थिंक क्रिएटिविटी लाइज ऑन द पर्सन हाउ इट सीज. और अच्छा इसके ठीक अलावा है. हाँ इसमें जो अब जो बुनियादी बात है ना वो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा मकसद है ना ये है कि वी वांट टू अडॉप्ट दोज हैबिट्स व्हिच विल हेल्प अस इम्प्रूव. वी आर नॉट पासिंग अ जजमेंट कि कौन होगा कि नहीं होगा. तो जनरली व्हाट आई सर जो लेफ्ट वाला है एक्चुअली वो मेरा ख्याल है ही इज अ बॉल्ड गाय. मतलब उसके बाल नहीं है सर पे, तो वो फोटो एडिट इस तरह से कह रहा है कि वो बाल कुछ नजर आए सर पे, तो उसके लिए जितनी भी क्रिएटिविटी उससे हो सकती है वो उस तरह से कह रहा है. हाँ ठीक है. इसमें आमतौर पे जो जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट साइंटिफिक क्रिएटिविटी. और जनरली जो जर्नल असम्पशन है ना जो नोशन है कि somebody starts behaving eccentrically people try to associate creativity with him. मतलब there is no evidence. तो ये दोनों बराबर के क्रिएटिव हो सकते हैं. हो सकता है ये राइट वाला ज़्यादा क्रिएटिव हो. तो इट्स अगेन अ मैथ. फिर ये एक और एग्जांपल है कि मतलब व्हाट द थिंग इज दैट व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इज दैट कि अगर आपने क्रिएटिव बनना है ना तो एक बंदा जो है ना अजीबो गरीब एक स्टूडेंट जो है ना वो अजीबो गरीब हरकतें शुरू कर देगा. कपड़े डिफरेंट पहन लेगा. बाल लंबे रख लेगा. मैं कहने का मकसद ये है कि दिस विल नॉट हेल्प यू टू बिकम अ more scientific creative person. These are just myths never supported, commonly held. So generally if you talk with non scientific people this is what they will most of them. आप देखेंगे कि कोई सिंगर है वो खास तरह से कपड़े पहन लेगा. उसका सारा जो उसका टैलेंट है इट्स रिलेटेड विद हिज वॉइस नॉट विद हिज क्लोथिंग. बट दिस इज द जर्नल असम्पशन. और जो है ना वो लोग जो है ना अजीबो गरीब हरकतें शुरू कर देंगे रादर देन फोकसिंग ऑन देयर एनर्जीज ऑन एक्चुअली थिंकिंग अबाउट सॉल्विंग एन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम. इस केस में भी यही है कि द पर्सन ऑन द लेफ्ट सीम्स टू बी अ बोरिंग पर्सन और जो राइट वाला है मे बी लुक्स लाइक मोर क्रिएटिव. बट दैट इज़ अगेन नॉट सपोर्टेड और हम ये साबित करेंगे. तो इसके लिए ना ये सबसे एक मैं वीडियो आपको प्ले करता हूँ ना तो आप ये सुनें कि व्हाट आर दी बिलीव्स जो कि समझे जाते थे ओवर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री कि क्रिएटिव आदमी कौन होता है. ये बहुत फेमस एक ऑथर है. इन्होंने एक बुक लिखी हुई है. शी विल टॉक अबाउट इट.
तो we will take a break like in 5-10 minutes ताकि जिन्होंने नमाज पढ़नी है पढ़ लें। इसमें तो दिस इज़ अ वेरी गुड टॉक, आप ये सारी सुन सकते हैं, बट यू विल सी कि जब एक ये अब इन्होंने शी इज़ एन ऑथर, तो जो नॉन टेक्निकल वर्ल्ड है दे हाउ डू दे रिलेट विद क्रिएटिविटी, तो अभी ये बताएंगी कि हिस्ट्री में कैसे होता था और रीसेंट आर्टिस्ट की एक एग्जांपल देंगी। तो लिसन केयरफुली।
जी अस्सलाम वालेकुम. I think so there is something wrong with the connectivity. अब आपको नज़र आ रही है स्क्रीन? I have changed my location. नो सर, अब आ रही है सर. तो ये मैं लिंक पेस्ट कर देता हूँ. Watch this and let's meet after 10 minutes break, 10-15 minutes break. जिसने नमाज पढ़नी है वो नमाज पढ़ लें. By then we will have fixed this issue. मैंने शेयर कर दिया आपसे लिंक. And especially 6 to 7 minute and 10 to 12 ये दो आपने पोर्शन ज़रूर सुनने हैं. We will see about that. Okay. Okay, let's take a 10-minute break.